Good morning, dear students. Today we continuing uh, the 8th chapter, Human Health and Disease. In today's lecture, we'll be discussing about immunity, a very important topic for your examination purpose. And if we are talking about immunity, immunity is the overall ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by the immune system. Every individual have their own immune system, and this immune system is able to fight against the disease and disease causing agents present in the environment or attack the body or attack the individual. The capability of multicellular organisms to resist harmful microorganisms from entering their cell or from entering their body is basically known about the immunity. इम्यूनिटी का मीनिंग ही है इम्यून सिस्टम. आजकल कोविड-19 कोरोना के दौर पे भी ये बोला जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको ये वायरस जो है उसका असर जो है उस पर बहुत कम होगा, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है उसको वायरस का असर ज़्यादा होगा. तो इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी कौन बनाता है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी खुद बनाती है. हमारी बॉडी की अपनी एक इम्यूनिटी होती है और उस इम्यूनिटी के बेसिस पे ही हमारी बॉडी किसी भी डिजीज़ से, किसी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ाई लड़ती है, फाइट करती है और उस फाइट को जीतती है. तो एक पर्टिकुलर कोड भी है कि टफ टाइम डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू. तो टफ पीपल मीन्स जिसकी इम्यूनिटी, यहाँ पे है ये टफ पीपल का मतलब हम जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उसकी बात कर रहे हैं. If you are talking about the types of immunity, immunity is usually of two main types. The first one is called innate immunity and the second one is called acquired immunity. As it indicated by its own name, innate immunity means the immunity which is inborn, which is inherent. So this is also known as the inherent immunity, and this type of immunity is always present. It is the primary immunity. It is the non-specific immunity. Non-specific immunity means, if we are talking about the acquired immunity is usually specific immunity. For example, अगर हम बात करें पोलियो की, तो पोलियो एक वायरल डिसऑर्डर है और इस पोलियो को दूर करने के लिए कुछ वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स बनाए गए हैं. एक पर्टिकुलर वैक्सीन है जिसे हम पोलियो वैक्सीन कहते हैं. उसे पोलियो ड्रॉप्स के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में बच्चों को दिया जाता है. तो पोलियो ड्रॉप जो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी छोटे इन्फेंट को, बच्चों को पिलाए जाते हैं, किस लिए पिलाया जाता है? इसलिए पिलाया जाएगा क्योंकि उसके थ्रू पोलियो जो है वो दूर हो जाए. तो क्या इससे हेपेटाइटिस दूर हो जाएगा? क्या इससे एड्स दूर हो जाएगा? क्या इससे और जो डिजीजेस हैं वो दूर हो जाएंगी पोलियो ड्रॉप से? नहीं होगी. क्या दूर होगी? केवल पोलियो जो है वो डिजीज दूर होगी. तो ऐसी इम्यूनिटी अगर किसी के अंदर पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो वो केवल पोलियो को ही दूर कर सकती है. एक ही डिजीज स्पेसिफिक है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी. स्पेसिफिक इम्यूनिटी आर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. Then
अगर हम बात करें नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, दिस इज नॉन स्पेसिफिक मतलब एक ऐसी इम्यूनिटी है जो हर एक के अगेंस्ट एक्ट कर रही है, वो कोई डिजीज स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगर हम बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन स्किन, सो स्किन जो है एक बहुत बड़ा बैरियर है जो 90% या उससे भी ज़्यादा जर्म्स को हमारी बॉडी में के अंदर एंटर करने ही नहीं देता है। तो अगर कोई जर्म्स, अगर कोई बैक्टीरिया या अगर कोई वायरस बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, तो ये कोई स्पेसिफिक वायरस या स्पेसिफिक बैक्टीरिया नहीं है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी के की स्किन को, स्किन बैरियर को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम बोल देते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी बाय बॉर्न होती है, हमें डायरेक्टली हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिल जाती है। इट इज़ द प्राइमरी टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इट इज़ इमीडिएट इम्यूनिटी, ये तुरंत काम करती है, तुरंत रिस्पॉन्स देती है, ये किसी भी प्रॉब्लम को समझने में टाइम नहीं लगाती है, तो इसके रिस्पॉन्स हमेशा क्विक होता है। देखिए, अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इसके अगेंस्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स हमेशा स्लो होगा। फर्स्ट टाइम एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स हमेशा स्लो होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी नहीं होती, ये वो इम्यूनिटी है जिसे हम गेन करते हैं, जिसे हम अ, अपनी लाइफ में बनाते हैं, और मेन इम्यूनिटी जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब भी हम बात करते हैं तो इट टेक्स सम टाइम, आफ्टरवर्ड ये उस चीज़ को याद रखती है, मेमोरी पावर होती है इसमें, और उसके थ्रू ये नेक्स्ट टाइम से जो रिस्पॉन्स है उसे क्विक करेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम का रिस्पॉन्स स्लो होगा। लेकिन ऐसा इन्नेट इम्यूनिटी में नहीं होता। इन्नेट इम्यूनिटी इज ऑलवेज फॉर्म अ इमीडिएट रिस्पॉन्स। It is present at the time of birth and accomplished by providing different types of barriers. इस immunity के लिए there are so many types of barriers, which include the four basic type of barriers, which is known as the physical barriers, the the physiological barriers, the cellular barriers, and the cytokine barriers. So let me first talk about the physical barriers. The physical barriers include, the main physical barrier is the skin. It is the first level of defense in our body, and skin is the main barrier, and which can prevent the entry of most of the microorganisms, most of the bacteria, most of the viruses, etc. एक्सेप्ट द स्किन, हमने पहले ही बोला स्किन तो 90% जर्म्स को बॉडी के अंदर नहीं आने देती। एक्सेप्ट द स्किन, सम म्यूकोसा कंटेनिंग ट्रैक्ट और इपिथीलियम in the respiratory system, in the gastrointestinal system, or in the urogenital system, also help in trapping microbes and microorganisms. There is epithelium, the inner wall of our respiratory tract, and the inner wall of our uh, alimentary canal also provide some barriers for the prevention of the diseases or disease causing agents. The next one is physiological barriers. The physiological barriers include, usually physiological barriers include the acids which are present in stomach. As we know that hydrochloric acid is there within our stomach, which is very very acidic, and if some bacteria or some microorganism enters our stomach, the hydrochloric acid present within the stomach can digest the microorganisms. So this is the physiological barrier. Except the stomach acid or the acid which is present in our gut, some mucosa layer is also there, and mucosa layers include the tears in our eyes, which is usually antibiotic in nature, which can kill the bacteria, and the saliva which is secreted through our mouth, um, all prevent the microbial growth. So the physiological barriers include the stomach acid,
which can prevent the growth of the microbiome. The saliva is also responsible for the digestion of many microorganisms or prevention of many microorganisms and our tears. The next barrier is the cellular barriers. And if we are talking about the cellular barriers, it is some types of cells which are responsible for the fight against many microorganisms. These cells include leukocytes and monocytes. A specific leukocyte, monocyte are type of the WBC, white blood corpuscles. Some specific neutrophils, which are known as PMNL, polymorphonuclear leukocytes, monocytes, natural killer cells, macrophages. There are so many types of white blood corpuscles which are useful for the killing of many microorganisms, many bacteria. These cells are present in our body, which are part of the WBC, and protect our body from the infection from the microorganism, which can cause many types of infections. The next one is, then the last one is cytokine barriers. Cytokine barriers include a very specific protein known as interferon. Interferon is a type of specific protein which is secreted by the cells which are usually infected by some of the viruses, and the virus infected cells secretes the interferons, which is a specific type of protein which protect non-infected cells, the adjusting the neighboring cells uh, from the further infection of the virus. So these are some type of barriers which are required in the innate immunity. And uh, some other cells are also there which can participate in the innate immunity. These include some specific natural flora is also there. Natural flora means natural flora means the um, bacteria. Natural flora include the bacteria. Natural flora include the bacteria which is present which is present within our gut, in small intestine, which is present in small intestine, and which can also kill the other bacteria which are not good for us, and it can also secrete some vitamins like vitamin K, which act against the bad bacteria. This includes the natural flora. So this is these are all the types of barriers required for innate immunity or present within our body. The physical barriers is the first line of defense, which include the skin. The physiological barriers are present in our stomach or in our mouth in the form of saliva, the acid, the tears in our eyes,
The cellular barriers include some type of WBC cells, and some other type of WBC cells are part of acquired immunity. And the last one is the cytokine barriers. The cytokine barriers include some specific proteins which are usually known as interferon. So, this is all about the innate immunity. In the next lecture, we'll be discussing about a very important topic known as acquired immunity. Thank you, guys.